So in the Yes, ma'am. previous classes, we are learning some chapter. We are doing also practicals for that. Most important, we are learning a scratch chapter. That is totally depend on the practical. If you know the practical, you already know what will be came in the scratch. So now all things you are doing in your computer. What the computer have. कंप्यूटर के अंदर आपने प्रैक्टिकल किया, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इनसाइड. कैन एनीवन टेल मी व्हिच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? Okay, so tell me which is the brain of computer? CPU. CPU, yes. CPU is the brain of computer. If you want to do any single work, अगर आपको कुछ भी work करना है, if you want to do the painting in your computer system, that time you have to be compulsory use your computer, you use the keyboard, you use the mouse, but that will be all processing have been done in the CPU. So CPU is called the brain of computer. Now for this is the chapter is totally depend on the CPU. You can see the CPU is like a one rectangle box, but उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं. So your chapter name is inside the system unit. Your chapter name is inside the system unit. That is the under the CPU. आपके CPU में कौन कौन से components होते हैं, जिसका यूज आप किसके लिए करते हैं? आप मैंने बोला कि अगर आपको पेंटिंग करनी हो तो प्रोसेसिंग होती है. सो विच प्रोसेसिंग विल बी डन दैट? Yeah, for that you have to be used in the detail. You are going to learn in the detail. No need to write down now. I will be share the notes after the completion of the chapter. Right. So let's learn about the inside the system units. These are the topics that you have to be learned in your class. So we already know that about the system is made up with the hardware and the software. So anyone can tell me what is the meaning of the hardware? Hardware का मतलब क्या होता है? Anyone? Ma'am, I can tell. Yes. And hardware means inside part and software means outside part. There is something mistake, I think. You do the opposite words. You tell the definition of software in the hardware and hardware in the software. Okay. So parts of computer that you can touch, that is called the hardware. कंप्यूटर के जो पार्ट आप टच कर पा रहे हो, जैसे कि अभी मैं कीबोर्ड को टच कर रही हूँ, माउस को टच कर रही हूँ, मॉनिटर को टच कर रही हूँ, that all are called as hardware. Whenever you touch the which things you are not touch, जैसे कि आपको पेंटिंग करनी थी, you are doing the scratch operations also, you are making the programs also in the scratch. So can you touch the scratch? आपने स्क्रैच को टच किया था? No, ma'am. No, ma'am. Please start over. Yes, means everyone knows that we cannot touch the software. No, ma'am. So these are the main difference between the hardware and the software. In the hardware you cannot touch. The hardware is the referred the components that we can see and the touch, such as the keyboard and the memory chip. जो भी पार्ट कंप्यूटर के हम टच कर पाते हैं उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर. एंड सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेक द हार्डवेयर वर्क. जैसे आपको पेंटिंग करनी हो तो आप माउस का यूज करते हो, कीबोर्ड का यूज करते हो टाइपिंग करने के लिए. सो हार्डवेयर का यूज करने के लिए कंपलसरी आपके पास सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए. So now let's learn about the basic components of the CPU that we have. This is the basic chapter of the name. First is the processor, second is the main memory, third is the secondary memory, fourth is the CD DVD drive, fifth is the power supply, sixth is the computer fan,
7 is the ports and 8 is the motherboard. You can see this is the system that is inside the CPU. CPU को आपने बाहर से देखा है, वो एक rectangle box में होता है, right? ये जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे, that is totally inside of the CPU. CPU जो बाहर दिखता है उसके अंदर ये सभी सारी चीजें होती है जिसका यूज करके हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. So these are the basic components of the CPU: processor, main memory, secondary memory, CD/DVD drive, power supply, computer fan, ports, and the motherboard. You can please watch this image that is also given in your textbook. Okay, so for today we are doing only this thing because this is our first day. In the next class we learn one by one component in the detail. So you will be understood that how CPU will be work, how the part of the CPU can be work, which part is used for which one, कौन सा part किसके लिए हम use करते हैं. Okay, so if you have a query in the hardware and the software, so you can be asked me. In the second, no query. सेकेंड, ये जो सारे कंपोनेंट्स के नेम आपको दिख रहे हैं वो सारे हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. जो अभी जिसने मैसेज भेजा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, वी विल बी लर्न इट इन द डिटेल. मैं पूरा डिटेल में सिखाने वाली हूँ. प्रोसेसर क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है. सो डोंट बी पैनिक दैट यू डोंट अंडरस्टूड दिस वर्ड. अभी सिर्फ मैंने लिस्ट आपको दी है, ओनली वर्ड्स आई गेव यू. In the next class, we will be learn one by one the components of the CPU. Now, anyone have a query? मैम, Yes? ये कंप्यूटर फैन क्या काम करता है? हम डिटेल में सीखने वाला है, मैंने वही बोला आपको. We are learn one by one components in the detail. अभी मैंने सिर्फ आपको लिस्ट दिखाई है कि ये कंप्यूटर CPU के कंपोनेंट्स है. Okay, no query from your side. So we will be end now. मैम, हाँ? ये भी आप बाद में कराओगे, ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का है कनेक्ट? वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था. हमने क्लास 3 में पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का चैप्टर पढ़ा हुआ है. वो तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही थी. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी मुझे बताना पड़ता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या था. Only I gave the information to you. You have to just remember the definition. लिखना अभी आपको कुछ नहीं है, मैं सारी नोट्स आपको भेजूंगी, वो मैं आपको बता दूंगी. डोंट वरी, don't be panic whenever you see the blanks in your textbook. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. There is a one thing you can do that if you want to. There on the page number 1, there you can write down the hardware example and second side you can write down the software example. Page number 1 पे आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि हार्डवेयर के कौन से एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर के कौन से एग्जाम्पल्स है. And today, your choice. आपको लिखना हो तो that is for your information. Hardware, it's not necessary that you can write only from your book. Think about the computer and think which are the hardware parts. कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट है जो हमने देखे हैं. फिर सॉफ्टवेयर का सोचो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमने यूज किए थे क्लास 3 में. वो सारे सॉफ्टवेयर के नाम आप लिखोगे. मैम ओनली 3 लिखना है हार्डवेयर के बाद? नो 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 नो, ऐसा नहीं. आप कॉमा करके लिख सकते हो ना एक लाइन में. ओके मैम. Okay, so now anyone have a query? So how are you first? Huh? Fine.